कुछ सीखना था तो सर थोड़ा बहुत फेथ बिलीफ दिखाना पड़ता है समटाइम्स। जब मैंने यूपीएससी में इतना बिलीव दिखाया और यूपीएससी की जो कोचिंग होती है उनमें इतना बिलीव दिखाया, तो अब पार्ट बी का अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे उतना तो करना पड़ेगा, वो तो मुझे लेना चाहिए। तो समटाइम्स यू हैव टू से गुड बाय टू थिंग्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू। So I did it for me, and I hope for any other aspirant who are struggling, who are stuck in that, may choose to do the same। करके सर काफी पोस्ट आती थी जो पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी होती थी, जो कि पॉलिटिक्स से जुड़ी होती थी। कहीं ना कहीं किसी पे कोई अपने आप को मिनिस्टर की तरह एक इशू में डाल के पॉलिसी ब्रीफ कर रहा है, या कोई अपने आप को एज अ कंसल्टेंसी कर रहा है। तो वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो काफी एक नई चीज पता चल रही है। फिर जब नेक्स्ट ईयर जब मैंने उतनी ही मेहनत करी और मेरा नहीं निकला, सो देन आई स्टार्टेड कि अब तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अब क्या करते हैं। Hello Shobit, congratulations for getting into the Jarvis Consulting, a top-notch political consulting firm. थैंक यू सर। So how are you feeling? Sir, I'm feeling a mix of emotion, nervous, anxiety, excitement, and all of three at the same time sometimes. Good, excellent. So that also makes sense when you get into a role like political consulting firm at Jarvis Consulting. Yes, All sir. right. So for our audience, just can you give a brief introduction about you and share a bit about your background? Okay, sir. I'm Shobhit Prakash. I've done my bachelor's in political science and psychology, and I'm from Lucknow. I have completed my college in Lucknow from the National PG College, and after that I prepared for the UPSC exam, and I have given this UPSC for 2.55 years, prepared rigorously for this, and last year I decided to search for plan B and think something beyond that, and then I came to know about the political consultancy roles and allied opportunities. All right. Interesting. So you completed your graduation, I think, in 2022, right? Yes, sir, 2022 June. All right. So can you double click on how was your UPSC journey, the time you spent in it, 2.5 years, 3 years in it? Did Sir, you get a chance actually, to appear in mains and all? I was enrolled in program of 3 years that started from the first year of my college, and it go along to the last year of my college here. And I have done very good at the basic level of understanding, like history, geography, political science, economy. Not being from a background of economy, I understand what is economy and on that kind of terminology. And later on that, I have appeared for prelims in 2023, 2024, failed to advance in mains. Then I given UPPCs 2024 and 2025. The same outcome was repeated for me. Uh, my second paper of C that was above 100, but the mains was nearly around 80 to 90, and the cutoff in UPPC is always above 100. And for the UPSC, it was always a mixed game for me because I was not at good at maths, but I tried to manage and get at least around 70 in CSAT. But the prelim section is where that I lost that game. But after 2022, it was a very hard hit for me because in Hmm. 2023 it was my first attempt, and I knew that my preparation wasn't that good. But 2024 setback was literally took me to Hmm. think that what I'm doing with my life. Okay. All right. Yes, we can completely understand that. And did you appear in 2025 UPSC prelims as well? No, sir. 2025 and 26, no appearance in UPC, UPSC prelims. Okay. So at the time you were preparing for state services Yes, examination. sir. Yes, sir. Okay. And when did this idea of a plan B first came to your mind? And then what was the time when you started taking it more seriously? मतलब जब आपने start किया, did you had this idea कि if this will not work out, what will I do? So what was that idea when you started? Uh, सर सर, जब हम लोग कोचिंग में थे तो देर वॉज ऑलवेज अ डिस्कशन कि यूपीएससी तो आदमी कर ही रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं यूपीएससी। तो इसके अलावा अगर नहीं हुआ तो क्या क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि नहीं, कोचिंग पढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट हमेशा से ये था कि नहीं, जब इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं, तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ करके हो जाएगा। हाँ, वी कैन मैनेज दैट।
बट सर जब 2022 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद सर 2023 में मैंने जब दिया, तो आई थॉट कि मेरी मेरी साइड से प्रिपरेशन कम था। एग्जाम तो उसी साल पैटर्न भी चेंज हुआ था, कि जब जो एलिमिनेशन वाले थे वो हट के स्टेटमेंट वाले भी आ गए थे, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर मेहनत करते हैं, फिर देते हैं। तो जब नेक्स्ट ईयर जब मैंने उतनी ही मेहनत करी और मेरा नहीं निकला, सो देन आई स्टार्टेड कि अब तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अब क्या करते हैं। तो पर उस समय स्टेट पीसीएस का ऑप्शन था मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने फिर उसको पकड़ा, क्योंकि एट दैट टाइम वाज सेफेस्ट बेट कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। यूपीपीएससी, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करी तो यूपीपीएससी तो निकल जाएगा, इतना जनरल बिलीव कि इजी होता है सब, बे पे होता है, हो जाएगा। पर सर 2025 में लास्ट ईयर जब मैंने यूपीपीएससी दिया और जब मेरा नहीं निकला, और उससे पहले मैं जून से मैं लिंक्डइन पर मैं काफी एक्टिव था उस टाइम पे। तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, उन्होंने मुझसे कहा था कि लिंक्डइन बनाइए, लिंक्डइन पे आप रहे हैं आप, पर लिंक्डइन को एक्टिवेट करिए, उसको आप समझें क्या है वो प्लेटफॉर्म। तो उसी के थ्रू सर मैंने आपके आपके सर प्रोफाइल पे मेरा मतलब ध्यान गया, क्योंकि सारे यूपीएससी के मेरे कनेक्शंस में थे, तो सर आपका भी आया उसमें और रिबाउंस का भी आया। तो मैंने पढ़ा कि अच्छा, रिबाउंस एक तरह के आप एक तरह की फर्म है, एक तरह के एजुकेशनल फर्म है जो प्लान भी प्रोवाइड करवाती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट सर पहले टाइम पे मैं, अगर टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट टाइम पे जब मैंने देखा तो लगा कि हाँ, एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की तरह है ये। हाउ मैनी कैन गेट इट थ्रू, इट्स जस्ट अ फ्लूक टाइप ऑफ थिंग। तो फिर जब मुझे दिसंबर में जब मुझे दोबारा सेटअप बैक मिला कि मेरा यूपीपीसीएस नहीं निकला, तो मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ देखना पड़ेगा और भी देखना पड़ेगा। और इस टाइम पे मैं जामिया में इनरोल भी हो गया था पब्लिक पॉलिसी के डिप्लोमा में। सो सर एट एट दैट टाइम सर आपका कोहर्ट चल रहा था शायद, जुलाई का या अगस्त, जुलाई या अक्टूबर का कोहर्ट चल रहा था उस टाइम अक्टूबर पे। का। हाँ सर, अक्टूबर का कोहर्ट चल रहा था। तो सर उसमें आपको टैग करके, रिबाउंस को टैग करके, अक्षर सर को टैग करके सर काफी पोस्ट आती थी, जो पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी होती थी, जो कि पॉलिटिक्स से जुड़ी होती थी। कहीं ना कहीं किसी पे कोई अपने आप को मिनिस्टर की तरह एक इशू में डाल के पॉलिसी ब्रीफ कर रहा है, या कोई अपने आप को एज अ कंसल्टेंसी कर रहा है। तो वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो काफी एक नई चीज पता चल रही है। और फिर जब मैंने प्लान बनाया, जब मैंने आपकी वेबसाइट विजिट करी, मैंने आपके कोर्सेज पढ़े, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये इस पे ध्यान देते हैं। तो फिर मैंने जब आपका कोर्स जनवरी का कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं काफी सारे उस टाइम के करंट जो थे, जो करंट जो एसोसिएट थे आपके पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल साइंस के, मैंने सबको लिंक्डइन के थ्रू मैं रीच आउट किया था हम्म। फॉर अ फीडबैक गुड। कि कैसा प्रोसेस होता है सर का, कैसा है, क्या रहता है। तो सबकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और फिर मैंने जब बात करी, तो आपके जो आपके एंड से भी मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं सर, कोलैबोरेशन है, हो जाएगा। और सर कुछ सीखना था तो सर थोड़ा बहुत फेथ बिलीफ दिखाना पड़ता है समटाइम्स। जब मैंने यूपीएससी में इतना बिलीव दिखाया, और यूपीएससी की जो कोचिंग होती है उनमें इतना बिलीव दिखाया, तो अब पार्ट बी का अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे उतना तो करना पड़ेगा, वो तो मुझे लेना चाहिए। तो सर मैंने फिर वही आप दिखाया, फिर मैंने आपका जनवरी का कोहर्ट ज्वाइन करा। और सर फिर नाउ आई एम गेटिंग दैट इंटर्नशिप इन जारविस। So it's kind of हम्म। my faith and my belief materialized. गुड। दिस इज एक्सीलेंट। सो बिफोर यू गॉट टू नो अबाउट रिबाउंस, उससे पहले आपको यू हैड नो आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टिंग एज अ डोमेन, राइट? No, sir, it's not like that. For for me as a career, I was not sure. Political हम्म। consultancy as a domain, I was aware. As I'm a big big fan and a big admirer of Prashant Kishore. So I've been following him since 2018. So I know that about IPAC, our inclusive mind, how this field domain works. But as a observer, as a someone हम्म। who get lot of limelight कि अगर ये करते हैं तो ये होता है उस पे। But sir, how can you become a part of that? It wasn't in me. आई थॉट कि अगर आप यूपीएससी क्लियर करेंगे, आप आईएएस बनते हैं, फिर आप अपनी अपनी सर्विस को 10 साल के बाद छोड़ेंगे, फिर आप जाके काम कर सकते हैं। तो मुझे दिमाग में ये एक फ्रेमवर्क था, जो कि मुझे हम्म। रिबाउंस में आने के बाद पता चला कि नहीं, ऐसा ये नहीं फ्रिक्वेंसी होती, ये अलग तरह का भी होता है इसमें। आपको एक्स ब्यूरोक्रेट या एक्स पॉलिटिशियन या आपको इस तरह से होने की जरूरत नहीं है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में जाने में। ये और लोगों को भी हायर करते हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, अगर आपके अंदर वो टैलेंट या वो नॉलेज है जो ये फील्ड चाहता Okay, all right, interesting. So when you decided to join our January cohort, so है। यस सर।
what were you going through? What were your expectations at that time? So how were things around you? What were you going through? And what were your expectations from Rebounds at that time? सर जनवरी के कोर्ट में सर आई वाज ऑलवेज आई वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद द जनरल पॉलिटिकल कंसल्टेंसी टर्म्स कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मुझे था कि देखते हैं क्या होता है, एक प्रोफेशनल ढंग से पढ़ाया जाएगा, और आपकी मैंने मास्टर क्लास पहले भी ली हुई थी, तो उसकी वजह से था कि एक स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। वो एक बात है ना, द फर्स्ट थिंग टू समथिंग लर्न इज टू अनलर्न। नेवर थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड एवरीथिंग बिकॉज यू हैव नेवर मास्टर्ड एनीथिंग। तो सर जब मैंने फर्स्ट सेशन लिया आपका, तो इट वॉज वेरी इंसाइटफुल। अभी तक मुझे जो मेरे पास था वो मुझे एक तरह से सुपरफिशियल नॉलेज थी, या सुपरफिशियल मेथोडोलॉजीज के बारे में पता था कि अच्छा, 10 लोगों से बात कर लिया, 20 लोगों से बात कर लिया तो आपका कर सकते हो। पर सर जब मैंने आपके फर्स्ट सेशन लिया तो मुझे पता चला अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है, पूरी इसकी मेथोडोलॉजी होती है, प्ले बुक होती है। और फिर जब जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो जानकारी है इस फील्ड के बारे में वो और बढ़ रही है और डीप हो रही है। और फिर मुझे ये हम्म। था कि आई वाज जस्ट होपिंग कि रिबाउंड्स के थ्रू मुझे कहीं ना कहीं मेरा इंटर्नशिप या मुझे कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी में रोल मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो बैच था वो जून तक का था। तो वी वर जस्ट इन द मिड हम्म। कि फरवरी जैन में मैंने, जैन मिड से कोर्स स्टार्ट हुआ, फेब आया। तो इट्स वाज नॉट लाइक वेरी लॉन्ग, बट इट वाज अपॉर्चुनिटी कि नई चीजें सीख रहे हैं तो वो यूज होंगी भी साथ में। All right. Excellent. So, can you also walk us maybe how did your week usually looked like from let's say the time you joined Rebounds in January? Weeks, sir, actually, the classes held on Wednesday and Thursday. It was a 2 long master class, so you have to be make sure that you are there and attending and note making everything. Sir, after that 8 classes, we have an assignment. You have to do it with your peers, and you have to do it individually. So most of the time, doing that assignment, research work, that's happened, and the other time, my other things like that, I'm interning for another NGO, so their work, and so something my Hmm. like that I'm learning about data analysis, Power BI, machine learning. So sir, it's like that. So it's like the slots like I used to do in UPSC, that 3 hour slot, and others on basis of urgency, the what thing I have to do first. Good. So you were actively looking for opportunities at that time. You were not preparing. You decided कि अब UPSC एग्जाम या UPPCS ये सब नहीं देना है, right? You Yes were sir. just So the focusing on last, upskilling. yes sir. सर जब यूपीपीसीएस का रिजल्ट निकला था, आई एम श्योर कि नवंबर में निकला था, नवंबर या दिसंबर में निकला था वो। सो जब वो मेरा रोल नंबर लिस्ट में नहीं आया था, तो आई वाज मेड माय माइंड कि अब मुझे ही नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2.5 साल दिया है, मैंने कोई मास्टर्स नहीं करा है, मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ाई है। और सर जितना ये ग्लैमरस लगता है कि ठीक है हम 2 साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अगर हो गया तो इट्स अ गुड थिंग, आपको सब मिलेगा। बट जो नहीं होता है तो वो जो 2 साल का 2.5 साल का जो गैप होता है उसको जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लोग मतलब मोटिवेशन देते हैं उस टाइम पे या कुछ भी करते हैं, वो भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। वो भी एज अ, अगर आप हायर होने जाएंगे तो वो भी उसी चीज पे सवाल उठाएंगे कि ये तो जनरल टर्म है, आपने क्या करा, मास्टर्स ही कर लिया होता आपने, डिस्टेंस ही कर लिया होता। तो सर लास्ट ईयर आई डिसाइडेड टू इनरोल इन जामिया स्टूडेंट, जामिया डिप्लोमा। तो माई 2.5 years gap doesn't on look on my educational qualification. And alongside, I decided to enroll in Rebounce Political Consultancy and Data Hmm. Management Course. So in which program did you enroll for Jamia? Diploma in what? Uh, Sir, advanced diploma in public policy and governance. Okay, all right. So interesting. So you were part of their public policy diploma, and here you enrolled in our political consulting and data analytics program because you already Yes, knew sir. some of these fun day related to public Yes, policy. sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. Now, can you walk us through your journey with respect to the Jarvis Consulting? So, how did you got to know about it initially, and then how did the selection process look like? Okay. Sir, first of all, that opportunity shared by Rebounce community group. I wasn't aware about that opportunity. To be honest, I didn't get any idea of Jarvis as a firm also. I I knew about IPAC, political design, inclusive mind, exclusive mind, IBM political firms, but I didn't know about Jarvis political consultancy. Uh, I got to know about the through Rebounce community group, and there was a called GD.
that what they are looking for, and where this opportunity is based in, and how it will be my work they look like. And I applied that CV through Rebounce after going through at least two to three times drafting, like you giving me such suggestion, but still that was not a perfect, but it was a heavily worldly lengthy CV, but still Rebounce decided to go forward my CV and share with Jarvis, and it was a very it I'm very obliged for Rebounce to do that. And then I got in interview call from the Jarvis team, ma'am. And the interview was very easy as such. You given me all inside that, know what position you are applying, know what you have put in your CV, know about your basics, and be confident. And all those things were very helped me to ace that interview. And second of all, sir, that was an assignment that we have to made on West Bengal of about Kabir Humayun, the former Okay. TMC member and BJP member, and his influence in upcoming elections. So I decided to do analysis of that, all that. And sir, everything that you have told us, that how you see that constituency influence. Like if someone is powerful with a party, doesn't mean he can pull votes if we fight independence. It's not happen. Like party has it their own way. People support that party. And sir, especially that polarization factor, counter polarization, the bipolar order, that one state the politics affects another if they share boundaries. We- So sir, these kind of things will really help me to draft my assignment. And sir, I submitted, I aced that first round. Then the second, I got call after the second that I've been selected for the Jarvis internship. So basically, you are saying only one interview, and then Yes, after sir. that, an Assignment. assignment, and finally, you got an offer letter. Yes, sir. Good. So इसमें कितना time लगा in this whole process from you applying to finally you getting the offer letter? Sir, at least 20 days. Around 20 days. All right. And can you also tell us maybe some of the things which actually helped you excel in the interviews? Sir, I will say that your suggestion on know the JD, know your CV better, and always be aware of political surroundings if you are applying for a post that require that. And if Hmm. you like, if you doesn't know about like political activities, the political happening, then how you gonna ace in that interview that requires political consultancy or political awareness? So that was the tip that you have given me during our last session. Was great, really helpful. Hmm. And can you tell me maybe some of those three things from your UPSC preparation which you found relevant in excelling this interview? Or was that preparation even relevant in excelling this interview at Jarvis? Sir, I would say that correlation, connecting things like international relation, connecting to economy, and connecting those two to politics. How can it impact? How how like a war, a closure of a state of Hormuz can affect the oil prices, can affect that diesel prices, then that directly result into increasing of inflation, how imports can affect, how exports can hurt. So the UPSC preparation actually sir, provided a base that you have to correlate everything that happens in a correlation of things. It never alone. One thing happens because of another. And if one thing happens, that can have a serious connecting event. Hmm. So sir, And UPSC preparation really build my base and analytical skills to see things hmm. analyzed from a neutral perspective, not from a political or ideological perspective, but a neutral perspective, how it will really affect politics and people's life. Okay. All right. So basically, you were able to directly or indirectly leverage your UPSC preparation knowledge and Yes, sir. journey in excelling this interview at Jarvis also. Yes, sir. Also, can you, for let's say someone who is just applying for it outside at Jarvis Consulting, can you tell me some of the tips which you would give to them, to excel this interview? So just know their CV.
that what they have put it, they should be accurate and actually have an idea. Second of all, JD, that the role that they're applying is relevant to them or not. And third, sir, is confidence. Know that they are unique in their own way, and if they have something, they should fully believe on that. Right, absolutely. And obviously, the placement partnership which we did at Rebounds with Hmm. Jarvis, this acted as a catalyst in your overall selection process. Yes, sir. Actually, Hmm. ठीक है. All right. And can you tell me maybe some of those three, four things which you specially gained at Rebounds, which helped you to crack this interview? what I have gained in this account, sir, first of all, a structure of vertical consultancy. That how this team really works. What is the idea of a student who just aspire or just have attraction towards the field to know that how it actually look like. And so second of all the basics that this field has beyond just election numbers and campaigning, there are the Form 20 analysis, booth analysis, and sir, constituency grading and all that tools that we need to do that to make our things good. And so still I am at Rebounds. I'm not, my course is still on, so I hope to learn more new things and to be a more productive. So the basics I have learned at Rebounds, and it will really help me to do good in my interview, and I hope to learn many new things Good, uh, excellent. in that. And can you also tell me, let's say, because you had a gap of 2.5 years Yes, because sir. of UPSC preparation, so how was that gap treated during the interviews? Did they ask any question around it? How did they look at it? No, sir, actually, they didn't ask me any question about that. So it's not like that the job that they are looking, that a candidate they are searching, they has to be relevant of Indian politics and things. And that UPSC preparation already given me that kind of understanding of Indian political system, economy, and all the connecting things. So, sir, it doesn't matter. So, for them, it doesn't matter that. And plus, sir, the CV is shared by the rebound. So, sir, they have actually thought that the CV must have something. The candidate must have something that the rebound shared to them. Absolutely. And then you converted this internship with a strong possibility of converting into a full-time opportunity, right? Yes, sir. Based on the performance. Okay. All right. Excellent. So finally, to wrap up, what advice would you like to give to ex-UPSC aspirant who is just coming out of the cycle of UPSC and is having this dilemma of, whether to join Rebounds or not? Sir, I would just say, do your research. Reach out to all the associates that have already been in rebounds. Go through your website, go through your LinkedIn profile, and see how the students are performing at that thing. And you have to take a lead. You cannot sit for the time to make sure that but next year, not this year, but next year, because it's never you can never have a clear say that when you're gonna be selected for that job. So if you think that you have done, you have given UPSC preparation everything, and you do not have anything more to give. So sometimes you have to say goodbye to things to start something new. So I did it for me, and I hope for any other aspirant who are struggling, who are stuck in that, may choose to do the same. All right. Thank you. Thank you, Shobit, for sharing this. I'm absolutely 100% sure that your experience of this transition will inspire and guide a lot of other candidates who are looking to get into similar domains. Thank you for sharing this. We Thank you, wish sir. you all the very best. Thank you, sir.